Welcome back to the Wings on Wheels. As you guys know, that project El Sueno, which is about modifying my Volkswagen GTI, has been going on. And if you haven't watched the previous series about my new Miltech Sports exhaust, then I would advise you to see it first and then come and watch this video. So guys, moving on, today we are at Autopsyche, which is in Silver Oak Farms, MG Road, for the installation of Forge Motorsport BOV on my Volkswagen GTI. We have done a quick unboxing of this BOV, which consisted of an alloy valve, a solenoid and some hoses. So we are going to install it directly on the turbo, and it is just a replacement part of OEM diverter valve. So if you're wondering about what's the function of BOV, then let me explain you that it's just for venting off the extra boost from the turbo into the atmosphere, onto which it makes a whooshing sound. There are no performance gain or loss by using a BOV, and is just there for some road entertainment. बांध देंगे ना पहले टेस्ट कर लें पूरा ठीक काम कर रहा है फिर बांध देंगे एक मिनट रुको करूँ स्टार्ट? 2000 आरपीएम तक रैप करके छोड़ ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा करो ज़्यादा एक बार ये फुल रैप करके छोड़ ठीक है भैया। हाँ ठीक है यार जीजू सुन उतरी जीजू बात सुनी उड़वा देगा ये पूरा। देखो इसके बाद छोड़ियो। ओए तेरी आवाज आ रही है तगड़ी। इसका ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ एग्जॉस्ट से ज्यादा इसका मजा आ रहा है। शीशा खोल के सुने। हाँ एक बार रुको जब बूस्टर पाएंगे तब मजा आएगा। चीज है पूरी खाली है। इस तरफ करके खींचियो। ओए तेरी ये सही कर रही है भाई। अच्छा गियर डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट में नहीं आ रही, सिर्फ जब एक्सीलेटर छोड़े हो ना सिर्फ तभी आ रही है। देखो